Dear teachers, as we know all that science is knowledge and knowledge is wisdom, and in science knowledge, wisdom should have reasoning, should have logicalness. Only then that knowledge, that wisdom will be fruitful to the learners. As you know all that human brain is curious by nature. It is the intrinsic characteristics of the human to know the things whatever he or she see around their habitat or in this world. ये हमारा ब्रेन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है कि जो भी हम देखते हैं अपने आजू बाजू में या इस पूरे संसार में, हमारे जानने की इच्छा रहती है कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, एंड इसके जो आंसर्स हैं वो हैं साइंस में. साइंस गिव ऑल द आंसर्स टू दीज क्वेरीज, टू दीज क्वेश्चंस बाय एक्सपेरिमेंटेशन, बाय डेमोन्स्ट्रेशन, by a survey method, by a project method and many more. साइंस जो है हर सवाल का जवाब देती है हमें, and science you know is a dynamic subject which keeps on moving, which keeps on increasing the knowledge, and this knowledge, this wisdom is very, very fruitful for the mankind. As far as upper elementary is concerned, at upper elementary our focus should be on the topics like conservation of forest, conservation of land, conservation of natural resources, justice use of natural resources, reproductive organ, sexual organs, metals and non-metals, air pollution, water pollution, and many more topics. Our focus should be to increase more knowledge on these themes, on these topics. As a teacher, our main aim is to increase the knowledge of the learners by using different skills, by using different components, and by using ICT and many more. While teaching in the class, especially in science, teacher should be on their toes, and teacher in the class only on their toes when he or she has the mastery over the content, mastery over the skills, mastery over the components, mastery over the ICT and many more. As a teacher, it's our duty to inculcate scientific aptitude among the learners, scientific attitude among the learners, and it only happens when we do our best. So my advice to you all that do the best, do the best, do every day, do the best, do the best, do every day. A golden rule is the must, always do you best. A golden rule is the must, always do you best. Cheer on, you smile, always do you best. Do the best, do the best, do every day. Do the best, do the best, do every day. A golden rule is the must, always do you best. A golden rule is the must, always do you best. Cheer on, you smile, always do you best. Cheer on, you smile, always do you best. That's all. Hello friends, today we are going to discuss the methods or pedagogy of teaching at upper primary stage. Whenever you teach at upper primary stage, you have to go through themes like conservation of forest, biodiversity, sound, light, natural resources, forest, wildlife, combustion, carbonized compound, metals and non-metals, and many more.
So whenever you teach in the class, you have to go first the habitat of the child. You have to start from the familiar environment of the child so that child feel comfortable within the class. Suppose I am taking light. I will ask some question to the child that what is light. Students say, sir, we have no idea what is light. So we have to start from the familiar environment of the child. So I will ask to the student like this. Yes, Rahul, what is this? Sir, this is bulb. Yes, this is bulb. Okay. ये बल्ब हमें क्या देता है? सर, ये बल्ब हमें लाइट देता है. वेरी गुड. ये जो बल्ब है, ये किसकी मदद से हमें लाइट देता है? यस, नो आइडिया सर. यस एनीबॉडी? यस, सीता. हाँ, यस सर. ये जो लाइट हमें मिलती है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें लाइट जो है वो मिलती है. इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करता है हमें लाइट जो है देने में. ओके, वेरी राइट. सो एनीबॉडी, could you explain me from where we get electricity? Yes, 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 Sunita. हाँ सर, electricity we get from hydroelectric projects. Very right. And also from various sources like sun, like moon. हमें चांद, हमें सूरज से जो है रोशनी मिलती है. और सर, ये जो रोशनी है, ये इसको हम कहते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. और जो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें लाइट मिल रही है, ये एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है. ये हमें कैंडल से भी मिलता है, जिसको हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. ये हमें जो है टॉर्च से मिलता है, जिसको हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, दैट इज artificial source of light and natural source of light. Very right. Sita correctly said that this is light, and light is of two types, that is natural source and artificial source of light. This star is for Sita. So बहुत सारा क्लैप जो है वो आप जो है सीता के लिए करेंगे. So आगे चलते हैं. Dear teachers, now we will discuss suggestive pedagogical process. Learners should be given equal opportunity while learning in pairs or groups. One thing more, whenever you create groups within the class or outside the class, that group should be heterogeneous. हेट्रोजीनियस ग्रुप क्या है? जिसमें गिफ्टेड बच्चे भी आते हैं, एवरेज, अबव एवरेज, गुड, पुअर, बिलो एवरेज, ये सभी बच्चे जिस ग्रुप में आते हैं, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप. और हेट्रोजीनियस ग्रुप जो है वो बहुत ही जो है बेनिफिशियल होता है. इससे जो वैल्यूज हैं लाइक लव, अफेक्शन, कोऑपरेशन जो है वो बच्चों में इंक्रीज होता है. फ्रेंडशिप जो है बच्चों में इंक्रीज होता है. और दूसरा, जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनका बेनिफिट होता है इन बच्चों को जो बिलो एवरेज हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, उनको लर्निंग में बेनिफिट होता है गिफ्टेड बच्चों से. तो हेट्रोजीनियस ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग इंटेलिजेंशिया के बच्चे होते हैं उसमें, और ये बहुत ही फ्रूटफुल रहता है क्लासरूम लर्निंग में. सो लर्नर जो है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अंडरस्टैंड करने में. कोई भी फिनोमेना टीचर जो है वो टीच कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सेंसेस लाइक टच, स्मेल, टेस्ट, हियर, सी. सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट्स ले आए हैं घर में,
घर से स्कूल में और क्लास में बच्चों को दिखा रहे हैं, आप लिमिटेड बच्चों को, थोड़े से बच्चों को जो फ्रंट में बैठे हैं उनको ही गिफ्ट, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप उनको सेंस करवा रहे हैं, बाकी बच्चों को नहीं करवा रहे हैं, तो वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो बच्चों को नहीं मिला। तो आपने इस हिसाब से अपना जो लेसन जो है, आपने टीचिंग जो है वो डिलीवर करना है, ताकि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले। टीचर को अपनी टीचिंग में इनोवेशन लानी चाहिए। टीचर को कहा जाता है कि टीचर शुड बी लाइक ए मैजिशियन, और मैजिशियन जो है आपने देखे हैं, मैजिशियन जो है वो ऐसा होता है कि जब हम मैजिशियन को देखते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन जो है फुली उसी पे रहता है। तो इस तरह का हमें जो है अपने आप को बनाना है, हमें एक जादूगर अपने आप को बनाना है, ताकि बच्चे जब हमारी टीचिंग को देखें तो उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हमेशा जो है हमारे पे रहे। सपोज वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे बचाना है, तो हम बच्चों को बताते हैं कि वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, और जितना ज्यादा प्लांट्स होगा तो उससे उतना ज्यादा वाटर जो है आपके एरिया में रहेगा, उससे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो चलते रहेंगे। बट इसके साथ साथ हम और भी बच्चों को बता सकते हैं, जैसे कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, दैट इज कैच द रेन where it falls and when it falls. So हमने बच्चों को बताना है कि जब भी रेन होता है और रेन का जो पानी है वो क्या है, फ्रेश वाटर है, तो उस पानी को हमने क्या करना है, कैच करना है। कैसे कैच करना है, हमें अपने छतों पे उस पानी को स्टोर करना है, और उस पानी को एक पाइप के थ्रू हमें जो हमारे जो टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें सेव कर देना है। जहाँ हमारे गांव में तालाब हैं वो हमने और ज्यादा बनाने हैं और उसमें पानी को सेव करना है। वो पानी हम बहुत सारा जो है उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, फॉर वॉशिंग अवर पिकल्स और फॉर इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो वी हैव टू कंजर्व वाटर। सो नए नए तरीके जो है बच्चों के सामने हमने लाने हैं, नए नए इनोवेशंस हमने लाने हैं, जिससे जो है हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाए। हमने जो भी बच्चों को बताना है वो इस तरीके से बताना है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में उस चीज को जो है वो यूज कर सकते हैं। सो विद दिस दैट्स ऑल फ्रॉम मी।